Namaskar. Very good morning to all my dear friends. Welcome back to my channel A New Hope. With all your sincere request, now I coming with the syllabus of PGT Computer Science or IT Information Technology. Those who are preparing for KBS, EMRS, Eklavya Model Residential School या केंद्रीय विद्यालय or any type of PGT Computer Science teachership, please do watch this video because it's very helpful because all the syllabus are likely to be same. There is nothing beyond computer science, there is nothing beyond it. Yes, we can add some more concept or more theories in our syllabus if we are following basically to our graduation syllabus or basics of our post graduation. It will be very helpful for all of us. So please guys, do watch till the end, and I have a strong hope it will be helpful for all of you who are preparing for PGT Computer Science or IT. Thank you guys. Before starting the video, I have a sincere request to all my dear viewers. Your subscription, like and share the videos will encourage more and more encourage me to create such informational video and educational clips for you. So please guys, a sincere request to all my dear viewers, please do subscribe my channel, share and like the videos. Thank you. Let's start the video. Syllabus for PGT Computer Science. The first and fundamental things which come to our minds, that the fundamentals of computer, its origin, evolution, the first generation computer to now till 5G sector. So you have to first cover all the computers fundamentals, because when a normal non-IT sector candidate are opting for computer operation system like PGDCA course, DCA course, we learn all the basics of computer. But those who are professional and professionally qualified like computer science engineer, computer science professionals, IT professional, they know everything about the computer system. So but first we need have to cover all the fundamental parts of computer. Then the second thing is that the computer system, computer components जैसे कि इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिसको भी हम फंडामेंटल में पढ़ रही है. देन कंप्यूटर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वहाँ पर, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, बस इंटरकनेक्शन, पीसीआई, इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम ओवरव्यू, इट्स ऑपरेशनल प्रोसेस, देन सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी, cache memory, advanced DRAM, organization, input, output, etc. Those सारे details which cover up with the preview of a fundamentals of computer, basics of computer. Then the second thing is that the central processing unit or ALU, जो कि हमने जब भी पीजीडी से करी हो कि कोई भी डीसीए कंप्लीट करी हो, उन लोगों को भी पता है कि एएलयू का मतलब क्या होता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू ए कंप्यूटर स्टडी. Then arithmetic and logical unity is the most important part of a computer. So what covers within it? Integer, arithmetic, floating point representation, floating point arithmetic, instruction set, characteristics and function, machine instruction, characteristics, types of operands, types of operation, addressing modes and formats, register organization, the instruction cycle, etc. Please to read everything else which is come under the purview of a computer processing unit or ALU. Then an introduction related to ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का जो है इंट्रोडक्शन सिस्टम का, सॉफ्टवेयर, रिसोर्स ऑब्स्ट्रक्शन, ओएस स्ट्रैटेजी, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच, timing, sharing, personal computer and workstation. Then process control and really time system, processes and threads using fork, join, quit. Then operating system organization जो कि है factors in operating system designing, basics of OS function, its implementation, consideration, process, modes, kernels, method of requesting system services, device drivers. Then device management, service management approaches, buffering, device drivers, performance tuning, process management related to system view of the process resources, initiating the OS process address space, process abstraction, resource abstraction process, hierarchy, seedling mechanism, strategy selection, non-preemptive
and preemptive strategy. Then synchronization processes. The candidate who are belongs to this preview, they can better add some new strategy, new theories, new fundamental to each unit, like synchronization principles, interactive processes, critical section, deadlock, coordinating processes, semaphore, spread memory क्या होता है, multiprocessor events, monitors, and the interprocess communication, and the new things coming in the 5G world. So please add the new concepts of computer, because day by day computer is going to develop more and more. So you need not need to be, there is no compulsion, you should follow these things only. You can add many more things on it. Then memory management, mapping data space to memory space, memory allocation strategy, fixed participation, variable participation, etc. देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ज़्यादा ही आप डाल सकते हो डिजिटल में, जो भी अभी का जो सिचुएशन का, करेंट सिचुएशन का जो डिजिटल डेवलपमेंट हुआ है, वो चीज़ आप डाल सकते हो. कम्बिनेशनल लॉजिकल डिजाइनिंग, जो भी आपका थ्योरी बेसिस होता है, वो राम रोम और भी ज़्यादा अभी तो हमारे डेवलपमेंट कंप्यूटर के ज़्यादा हो गया है, उसको आप डाल सकते हो. देन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल यूनिटी, basic operation only programming environment. Then programming tool, visual basics, introduction to programming, modular programming, object oriented programming, event driven programming, about visual basics like concept of project in visual basic, bb project हो, exe standard हो, activebase dll हो, activebase exe हो, जितना भी विजुअल प्रोग्रामिंग के टूल है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए. डाटा टाइप्स, कितना टाइप का डाटा होता है, सिंगल, डबल, लॉग, इंटीजर, स्टैरिंग बाइट, बोलेन डाटा, डेट, ऑब्जेक्ट वेरिएंट, वो जितना भी आपके डाटा टाइप्स के अंडर में आती है. मेनू एडिटर, आप मेनू को कैसे एडिट कर रहे हो, डायलॉग बॉक्स, ए नेम, इंडेक्स, शॉर्टकट, हेल्प, कंटेक्स्ट आईडी, जितना भी है. उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, रिकॉर्ड्स, डाटा टाइप्स, जितना भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो, जो डाटा स्ट्रक्चर की सीक्वेंस के रिलेटेड हो. उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो, कंप्यूटर बेसिस अभी भी जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग, ओरेकल हो या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, उसको आप रिसेंट का जो भी प्रोग्रामिंग हो उसका आप डाल सकते हो. उसके बाद आपकी है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कंसेप्ट, relation table attribute, tuple, roles, fields, data concept, staring, number of data values, data type, then data interior, domain and referential integrity. Then candidate key क्या होता है, alternate key, primary key, statement होता है, select statement होता है, using arithmetic operators, operator precedence. Then significance of null, value of null, then its values in arithmetic expression, defining and using column alias, connotations operator. एंड बिजनेस कंप्यूटिंग, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस कंप्यूटिंग, जनरल कंसेप्ट क्या होता है बिजनेस कंप्यूटिंग का. उसके बाद यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड, अंडरलाइंग डाटाबेस, बैक एंड, इंटीग्रेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड डाटाबेस, then more application areas of database, inventory control, financial accounting, pay accounting system, invoicing management system, personal management system, hard system, fees management system, जितना भी तो more details and develop management system relating to business computing, like using computer in the computer banking sector, health sector, in other sectors. You can add the related business computing program and softwares. Then data dictionary, data warehousing, data mining, metadata, object modeling, deduction to object, then web development. The final thing is that web development, no, there is more things. Yeah, okay. Web development, HTML, you all know that how it developed, URL, and all these things. So you need to cover related things about web development. Then web page authoring, related to the web development. Then document object model concept, importance of document object model, dynamic, etc. Then extensible markup language, introduction to feature XML. XML can be used with exiting protocols. XML के बारे में जितना भी ज़्यादा हो सके. Then multimedia and ऑथरिंग टूल्स, ग्राफिक्स डिजाइन जितने भी
टाइप का उसका कंसेप्ट यूज इम्पोर्टेंस वो सारे ग्राफिक डिजाइन के बारे में आप देख लो। उसके बाद जो भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस हो उसको आप फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए you should have to follow some basics units of your post graduation level, but morely focused on the graduation and plus 2 level syllabus. Thank you guys. Please subscribe my channel, like and share the videos. Thank you so much.